Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So you know that we've completed the most important chapter on the planet Earth, and the chapter is called acids, bases, and salts. It is easy, it is equally important, but sometimes when it comes to predicting and writing the chemical equation, predicting the correct reactants, predicting the correct ionic equations, observation, making salts, titration, excess method, and the most important, precipitation method, which works only for insoluble salts, it is very important. And as I mentioned, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो sometime we struggle to answer, और वही 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं which जो फिल्टर लगाते हैं between an A and B student, A and A star student, and A star and distinction student. So there are chapter जिसमें हर बच्चा स्कोर करता है. For example, I know कि air and water में हर बच्चा स्कोर करता है. States of matter में most of you got marks. Chemical bonding is easy stuff, you know, and energetic is easy stuff where you just need to draw the energy profile diagram. But at the same time, we have 3-4 chapters. एक जो हमने अभी किया है, जो भी हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, जो हमने इतनी डिटेल में शायद मैंने अपने सेशंस में कभी भी नहीं करवाया जितनी डिटेल में हमने यहाँ किया है. Honestly, हम उसको 3 क्लासेस में मैं कंप्लीट करता था और ज्यादा टाइम उसको हम 5 लेवल्स में लगाते थे. This time we've completed that chapter, I guess, in 5 lessons. It is not कि हम बहुत slow थे. I just wanted to discuss the full version, every single possibility that how examiner can test your understanding in that particular chapter. And we did some 2 worksheets as well. Today, we are going to start with another important chapter. Can you guess the name of the chapter? And anyone in the class? It starts with E. Mahnur. Ecosystem. Ecosystem? There's no such chapter in chemistry, Mahnur. Empirical formula. Astaghfirullah. Nile, there is no such chapter. Electrolysis. Electrolysis. आप सबका favorite. Electrolysis. So ready every, जिस किसी को आज तक electrochemistry समझ नहीं आई, बस ये उसी के लिए चैप्टर है, क्योंकि अब आपको समझ आने वाली है इसकी इंशाल्लाह. So I want everyone to have something to write, iPad or your notebook would work. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Electrolysis or electrochemistry is today's agenda. Right? In electrochemistry, let's straight away get to the topic. The first thing that we need to know is electrolysis. Electrolysis. How you should define a process in which the molten or aqueous form aqueous solution, molten or aqueous solution, is ionized. Is this the full definition? A process in which the molten or aqueous solution is ionized. Is this the full definition? If you read the name, it says electro. So where is the role of current then? It says electrolysis. So you basically, electro matlab current, and lysis is breakdown. So you basically break down, you ionize the substance. It has to be what? In the molten or aqueous form, because you cannot electrolyte a solid or a gaseous form in our syllabus. So a process in which molten or aqueous solution is ionized using electricity or using current. Makes sense, everyone? The definition of electrolysis. It is a process, a very important but easy. It is a process in which you ionize, not a solid, nor a gas, but you ionize a molten or aqueous. Right? You can only electrolyte the, whenever it is right, you see anything written with L small state symbol, it refers to the molten state symbol. And whenever something is written with AQ, that means it is aqueous, and L small n refers to the liquid. Whenever something is written in solid form, that refers to the S, that refers to the solid, and you know solid cannot be electrolyzed. Cannot be. So that's a very obvious question examiner would ask, that why a solid cannot be electrolyzed.
Because in the solid form, you all know that in solid, ions cannot move. So if ions cannot move, there won't be any conduction, because those are the ions which are responsible for the conduction of the current. So when the ions are tightly packed and they are unable to move, no current. But in the molten form or in the aqueous form, ions are free to move. So if ions can move, they can conduct. यहाँ तक समझ आ गई बात सबको? The process of electrolysis and why only the molten or aqueous can be electrolyzed and why the solid compounds cannot be electrolyzed. The reason is very obvious. The reason is in the solid form, ions are tightly packed, cannot move. In the molten or aqueous, ions are free to move, and that's why they conduct electricity. Now, to carry out the whole process of electrolysis, we need a special apparatus called electrolytic tank. So, let's understand the whole concept of electrolysis with the help of a label diagram. Right? So now, to carry out the whole process of electrolysis, we need a tank, a container or tank or something in which you have your electrolyte. Let's imagine this is our electrolyte. And electrolyte is, let's imagine we have NaCl liquid. So when we have NaCl liquid, that means we have Na positive and Cl negative ions. And we need some conducting rods and a battery. So we need rods known as, kya kehte hain rods ko? Those dipped into this solution. So this is electrolyte. Electrolyte is that molten or aqueous form which is to be ionized. Anything that has free ions and can conduct electricity is known as electrolyte. And we have this power supply called DC supply that is to be provided. We have two rods called, to hame chahiye kya? We need three things. The most important one is like the electrolyte. The other one is, electrodes. And we need DC supply. These three things are required. And hum kar kya rahe hain? We are building an electrochemical cell. Electrochemical cell, right? To build this very cell, we need electrolyte. Now let's define the term electrolyte. It is the same thing, a molten or aqueous form of an ionic compound that can be ionized using current. That can be ionized. कैसे ionize करेंगे? Using current. तो भाई electrolysis इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं. जिस चीज की electrolysis हो रही है उसको क्या कहते हैं? Electrolyte. And those rods, conducting rods, are basically act as electrode, and we have two different connecting with two different ends. One is bigger one. You see that the bigger one is basically positive plate, and the smaller one is your anode. Right? This one is smaller one. This is, this one is negative and positive. So the positive one is called anode, and the negative one is called cathode. These are just two different ends. So one is positive and another one is negative. So we are building the electrochemical cell. To build a cell, we need electrolyte, a molten aqueous form of a compound that can be ionized. You need electrodes. What is an electrode? How would you define the term electrode? It is the rod. Solid चीज होती है. Electrode, a solid can conduct electricity.
कैसे करेगा बताएं. What particles are responsible for conduction of electricity in electrode? Do you think that rod or that solid material would conduct because of free moving ions, or do you think it would conduct because of the free moving of neutrons and protons? Yes, Abdullah and Shariar, how would this conduct? The solid rod, which is labeled as electrode here. What particles are responsible to conduct electricity inside the rod? Mic is open, everyone. Nile. Sir, iron. Yes, Shariar says ions are responsible inside the solid material to conduct electricity. By the way, electrodes हमारे पास होते हैं. First listen the examples. चलें पहले बता देना examples तो बाद में बता सकता हूँ. Nobody knows how what particles are responsible to conduct electricity. अस्तगफिरुल्लाह. शाबाश जोया. या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर देगा. भाई whenever a solid material conduct, लिख लो सब लोग अपने दिमाग में बिठा लो. Whenever a solution or whenever a molten form conduct, देखो ये तो molten form थी ना, molten or aqueous. Whenever molten or aqueous conduct, they always conduct because of ions. Whenever a solid, whenever a molten or aqueous solution conduct, it always conduct because of ions. Whenever a solid conduct, देखो अगर ये solid है मेरे पास stylus, अगर ये conduct करेगा तो ये ions की वजह से नहीं करेगा. किस वजह से करेगा? Free electrons. Metals conduct करती हैं. Why do the metal are good conductor? Metals क्या होती हैं? Solid, liquid या gas? Metals are solid. So they conduct because of free electrons. Examples में आएगा. The most frequently used electrode is graphite. But we could use platinum भी use कर सकते हैं और भी use कर सकते हैं. I mean palladium भी nickel भी use कर सकते हैं. Make sense, everyone? So electrochemical cell, to build a cell, we need electrolyte, electrodes, the conducting rods. A question tha, few years back, 2-3 years back, the exact same question which I've just discussed. What are the particles responsible to conduct electricity in the solution here and in the wire here? तो भाई वो आंसर उसका ये था जो अभी बताया. Solution में कौन लोग हैं conduction के लिए? Ions. और wire में कौन लोग हैं? Electrons. ये बात आपको हजम हो जानी चाहिए सबको. DC supply is there just to help the reaction to proceed further. So you all know that this left side is connected to the positive terminal, so it should be positively charged, and this beautiful thing is connected to the negatively. So that electrode connected to the positive terminal is our anode, and that electrode connected to the negative terminal must be our cathode. इसको लेबल कर लें, ड्रॉ कर लें सब लोग प्लीज. कुछ पूछना है तो पूछ लें. Electrochemical cell. By the way, how would you define the term? लिख लें सब लोग. A cell which convert electrical energy into chemical energy. Electrical into electrochemical. Electrical into chemical. लिख लिया सबने? यस नो नहीं कर रहे तुम लोग. आज लगता है वीकेंड पे कुछ नहीं किया, सो के आ गए. Yes. शाबाश. Electric into chemical. So what type of this cell is? It converts electrical energy into chemical energy. ठीक है? So let's review the entire thing we studied so far. We started with this brand new chapter called electrochemistry. The first thing that we studied is electrolysis. It is the breakdown of the molten or aqueous solution. I mean, क्या लिखा मैंने? Process in which molten or aqueous solution is ionized. या breakdown भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया, but this is fine. Using electricity. So why can't we electrolyze a solid compound? Because in the solid form, the ions are tightly packed and cannot move. You can only electrolyte molten or aqueous form because in the molten or aqueous form, oppositely charged ions are free to move, can carry the current from one end to another one. Now we have electrochemical cell. To build this very cell, you need three basic components. You need electrolyte, you need electrodes, you need DC supply. Electrolyte is that molten or aqueous form which have free moving ions and that
can be ionized using current. Electrodes are the conducting rods. Conducting rod का मतलब they must have free electrons to conduct. And most frequently the electrode we use is graphite. Graphite के आगे लिख रहे हैं it is inert electrode. 10 रुपए दूंगा जिसने मतलब बताया why they are called inert electrode. And platinum is reactive. Why graphite is inert electrode? It is very important by the way. किसी को नहीं पता? Thank God मेरे 10 रुपए बच गए. Sir, chemical stability. Like what chemical stability, Nile? ठीक है, I mean. Resistance to reactions or something like that. Okay, yes, Samir. Yes, Samir. Sir, because they do not get used up in the reaction. Partially correct answer. अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा. Inert का मतलब मुझे बता दो. What? It doesn't react. Yes, inert का आपने पढ़ा नहीं? Periodic table भी पढ़ा है यार. Periodic table में एक चैप्टर हमने पढ़ा था. ग्रुप 8 पढ़ा था भाई periodic table में. उसका नाम था inert gases. Noble gases को क्या कहते हैं? Noble gases का दूसरा नाम क्या है? Inert gases. Which isn't chemically Anything that doesn't react. Anything that does not react. तो ये जो graphite होगा, it would conduct the electricity, but it would not react with the electrolyte. देखो, अगर आप diagram गौर से देखें तो it is dipped inside the electrolyte solution. Look at this pink or blue color, whatever it is. That rod, positive or negative, they are dipped inside the color. Color is solution. So inert electrode वो होते हैं that does not react. और reactive वो होते हैं that react. So graphite is inert. It does not react with electrolyte. Okay. Thank God मेरे 10 रुपए बच गए. Okay. Now, today we need to start with the electrolysis of molten compounds. क्योंकि हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? Aqueous और molten. Let's get started with the electrolysis of the molten compound. Ready, everyone? नहीं ready नहीं है तुम लोग. Electrolysis of molten compounds. भाई ready हैं आप लोग? Yes. no कर दिया करो. Yes, sir. Yes no कर दिया करो यार. तुम लोग बहुत सुस्त हो यार. ऐसा तो ना करो यार. Okay. तो यार ये अगर जिस बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया, I mean, हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है. Since I mentioned, हमें पहले इस attempt में we need to understand every possibility of every single chapter, and that's the beauty of this summer session. अगर हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, जो सेशन हम दिसंबर में करेंगे ना, आप लोग देखा जब एंड तक रहेंगे इंशाल्लाह टिल द डे ऑफ एग्जाम में आपके साथ होऊंगा. दिसंबर में बहुत जेनेरिक चीजें, जेनेरिक मतलब इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ करेंगे जैसे जैसे हम पेपर के करीब जाएंगे. बट सिंस वी हैव टाइम वी शुड चेक एवरी पॉसिबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर कि हम समर में हमने ज्वाइन किया है सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. नाउ मोल्टन कंपाउंड्स में फर्स्ट वन इज योर फेवरेट सोडियम क्लोराइड, मोल्टन, राइट. तो पहला चीज जो आपने करनी है, प्रिडिक्ट द आयंस. तो जैसे ही हम इस मोल्टन भाईजान में से करंट पास करेंगे, द मोमेंट यू पास अ करंट थ्रू दिस NaCl, व्हाट पॉसिबल आयंस इट कैन प्रोड्यूस. देखो ये मोल्टन है, इसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ओनली हैव सोडियम एंड क्लोराइड आयंस. तो आप मुझे बताएं कि व्हेन यू पास अ करंट थ्रू इट, चार्जिंग पे लगा दिया मैंने इसको, तो व्हाट आयंस, आयंस तो आपको पता है, इट वुड प्रोड्यूस Na आयंस एंड Cl आयंस. बट माय क्वेश्चन इज, इससे आसान क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूं यार, इतना कौन सा आसान क्वेश्चन. व्हाट चार्ज वुड यू एक्सपेक्ट ऑन सोडियम? यस शामीन. एंड हाउ वुड यू नो दैट चार्ज? शामीन. एनीवन इन द क्लास? बट शामीन विल रिस्पॉन्ड. Positive. पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव 1 बता दो ना बेटे शामीन. पॉजिटिव 1, राइट, दैट्स द फुल आंसर. 1 पॉजिटिव बेसिकली. तो क्लोरीन 1 नेगेटिव है. भाई जो मेरे जैसे हैं जिनको नहीं पता, आप कैसे पता चलेगा चार्ज का? ग्रुप नंबर देख लो भाई. इसका ग्रुप क्या है? 1 और इसका ग्रुप क्या है? 7. तो आपको पता है जो भी ग्रुप 1 में मिलेगा, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के आपने क्या लगाना है उस पे? पॉजिटिव चार्ज. और जो भी ग्रुप 7 में मिलेंगे -1. तो इसमें मोल्टन में तो प्रिडिक्ट करना कोई मसला ही नहीं. फर्स्ट स्टेप इज जस्ट प्रिडिक्ट द आयंस विद देयर करेक्ट चार्ज. प्रिडिक्ट कर लिया सबने? कर लिया. अच्छा, अब आ जाओ. ये आपके पास टैंक है, एंड इनसाइड द टैंक दिस इज एनोड. दिस इज, आज इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा ये सारा.
दिस इज कैथोड, और यहाँ पे आपके पास यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑल दीज। ये क्या किया मैंने, चलो ये आपके पास सारे आयंस हैं, ठीक है। और यू नो द बड़ी प्लेट इज ऑलवेज द पॉजिटिव वन, सो दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, राइट। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एनोड है, this is negatively charged, so this one is cathode. Now we are doing electrolysis of molten NaCl, which means we have huge amount of Na ions. एक Na तो नहीं है ना, और एक Cl. We have huge amount of Na ions and we have huge amount of chloride ions. Now यहाँ तक आगे हमने ionization कर दी, so we got sodium and chloride ions. Now let's look at into this tank again. We have oppositely charged ions with oppositely charged rods. Now you all know that this negatively charged ions will be attracted by the positive plate called anode, and the negatively charged ions are attracted by the negatively charged plate called cathode. But ये एक नहीं है, we have huge amount of Na ions. Let's, हमारे पास बहुत सारे Na हैं, सारे Na कहाँ जाएंगे, नेगेटिव के पास, और बहुत सारे Cl, सारे Cl कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव के पास। अब वो आपसे इंपॉर्टेंट चीज पूछेगा, आप बताएं what will happen at anode and what will happen at cathode. This is important, right? Write the reaction. Okay. Anode किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, जरा सब लोग देखें ना, मुझे बताएं what ions are attracting toward anode? The chloride ions. कौन जा रहा है एनोड पे, नेगेटिव आयंस ही जा रहे हैं ना, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव ही जाएंगे ना भाई, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना, ठीक है। Now all the chloride ions gathered around the anode. So anode wants electron because anode is deficient with electron. Positive charge है anode पे, क्या चार्ज है anode पे, all positive. Anode कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मुझे दो, क्लोराइड कहेगा ले लो, तो क्लोराइड मिलके आएंगे, 2 क्लोराइड मिलके आएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और वो किस फॉर्म में यहां से रिलीज होंगे, किस फॉर्म में रिलीज होंगे, क्लोराइड की नेचुरल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ Cl, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम में, यस, तो वो आराम से, एक्सीलेंट, तो वो किस में चेंज होते जाएंगे, they will start changing into chlorine gas. So all the chloride ion, they will lose electron, they will give up their electron to at anode, and they will release in the form of, what is the color of chlorine gas? The color of chlorine gas, किसी को नहीं याद, खुदा का खौफ कर लो यार, क्लोरीन का कलर नहीं याद किसी को? So it's a pale yellow. Greenish yellow. Yes, pale yellow, greenish yellow, acceptable, both Yellow acceptable. green. बस शहरियार बेटा तो रिवर्स कर दे, ग्रीन येलो नहीं सर, येलो ग्रीन। तीसरा क्या बताया था, येलो ग्रीन, आई मीन येलो ग्रीन, ग्रीनिश येलो, एक्सेप्टेबल। Lime yellow. यस आयला, आप क्या कह रहे हो? Sorry, it was lime yellow. Limeish yellow. I mean greenish yellow is fine, yellow green is fine. तो at anode what will you observe, यहाँ पे आपको bubbles नजर आएंगे of a gas which is greenish yellow, right, pale yellow, कुछ भी कह सकते। So anode पे क्या प्रोड्यूस होगा, a gas, लेकिन this is not simple, ये गैस तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयंस ने दिए वो कहाँ गए, all those electron will travel from anode, ये वायर है, इमेजिन ये एनोड था नीचे लगा हुआ। अच्छा इलेक्ट्रोड हमने किसके लिए, इलेक्ट्रोड तो हमारे पास कार्बन के बने हुए, ग्रेफाइट किस चीज का बना हुआ होता है भाई, ये हम जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं ये विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कर रहे हैं, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोड मेंस विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट किस चीज का बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्रेफाइट, इट इज कार्बन, तो वी आर यूजिंग कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, और कार्बन को हमने कनेक्ट किया हुआ वायर से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम एनोड टू, तो यहां पे आपको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेबल करना आसान, ये हमेशा होगा, एवरी इलेक्ट्रोलिसिस एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और नीचे सोल्यूशन में आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या होगा, द क्लोराइड आयंस विल बिकम, जो भी चीज एनोड पे जाएगी, एक बात अपने जहन में बैठा ले, जो भी चीज एनोड पे जाएगी या जो भी कैथोड पे जाएगी, that ions, those ions will change into their natural form. तो क्लोराइड है तो क्लोरीन बनेगा, सोडियम आयंस, अभी वो ऊपर वाली पूरी नहीं हुई, अब मुझे बताएं यहाँ पे सोडियम आयंस है, चलें पहले ऊपर वाली को पूरा कर लेते हैं, लेट्स बैलेंस दिस। तो यहाँ पे राइट पे 2 है, इधर भी 2 लगा दूं, बैलेंस हो गई। डू यू थिंक इट्स अ बैलेंस इक्वेशन? नो, दिस इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन until
एक क्लोराइड कितने लूज कर रहा है 1, तो 2 क्लोराइड कितने लूज करेगा 2. दिस इज अ फुल बैलेंस इक्वेशन एवरीवन, that every single time you have chloride ions at anode, they will release chlorine gas along with 2 electron per mole of chlorine gas. एक क्लोरीन निकलेगी तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ठीक है, बैलेंस कर दी मैंने. आई होप आप सबको समझ आ गया. लुक व्हाट हैपेंस एट कैथोड. कैथोड पे क्या जा रहा है? ऑल द सोडियम आयंस जा रहे हैं कैथोड पे सारे. ये बहुत इजी है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना. अभी हम इसको समराइज करेंगे तो यू कैन प्रेडिक्ट विद इन अ सेकंड द प्रोडक्ट्स. तो देखो सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर? मेटल्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? क्या सोडियम भी Na2 होती है या NO5 होती है या Na कुछ होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एट RTP रूम टेम्परेचर? क्या फॉर्मूला है सोडियम का? किसी को नहीं पता? Na. All metals are represented by their symbols. That's it. अब how can you convert this Na plus to Na? I mean, the only difference is the sodium should accept an electron. तो इसका ये है, हैक ये है कि जितना इसके Na के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, जो भी पॉजिटिव चार्ज, जो भी चीज कैथोड का नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव चीज जाएगी. कोई भी पॉजिटिव है, आपने देखना है कि उस पॉजिटिव के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दें, उसको वैसे लिख दें. 2 पॉजिटिव है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दें, उसको बस न्यूट्रल कर दें. कैसे न्यूट्रल करेंगे? जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. अब Na के ऊपर क्या चार्ज था? 1 प्लस, इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल. सबको समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो क्या सोडियम गैस होती है? डू यू थिंक शुड आई ऑब्जर्व बबल्स ऑफ गैस हियर? नाइल, शुड आई ऑब्जर्व बबल्स ऑफ गैस हियर फॉर द सोडियम? यस मानो. सर मेरा लैग हो गया था, आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या चीज बेटे? कहाँ से लैग हुआ? ये जो आप कैथोड के नीचे वाला जो आपने बनाया है. कैथोड पे every single time these are the cations, क्योंकि कैथोड पे क्या चार्ज है? क्या चार्ज है प्यारे बच्चों? कैथोड पे नेगेटिव. कैथोड है ही नेगेटिव. कैथोड इज नेगेटिव. कैथोड will attract the cations. देखो, C for cathode, C for cation, A for anode, A for anions. एक और हैक बता दिया आप, लेकिन आप एक याद रख लो, एनोड अट्रैक्ट एनाइन. समटाइम ये भी कंफ्यूज हो जाता है, हम नहीं होंगे. एनोड अट्रैक्ट एनाइंस, सबको याद रहेगा? ओके. कैथोड अट्रैक्ट कैटाइंस. नो कैटाइंस तो डिफरेंट चार्जेस वाले हो सकते हैं ना. कैटाइन ऐसा तो नहीं कि +1 वाला ही होगा. इफ अ कैटाइन हैज अ +1 चार्ज लाइक सोडियम, तो जो भी कैटाइन जाएगा इट हैज टू चेंज इनटू द सिंबल. तो उसको कैसे चेंज करेंगे? आपने उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके साथ ऐड कर देंगे. इफ अ कैटाइन लाइक मैग्नीशियम हैज अ 2 पॉजिटिव चार्ज, just add 2 electron. If something has a 3 positive charge like aluminum, just add 3 electron. Whatever the positive charge, add those electron and get simple out of it. इससे आसान चीज कोई हो सकती है? समझ आ गई सबको? ओके, थैंक यू. चले, अब मुझे बताएं, मैं पूछ रहा था नाइल और सबसे कि what do you observe at cathode? Do you think you again gonna observe some gases, or do you think no gas this time, something different, some chocolate or something else? क्या ऑब्जर्व करेंगे नाइल हम कैथोड पे? सर गैस. अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ. सोडियम गैस कब से हो गई नाइल? गिलगित में गैस होती है. आप कहाँ गए थे नाइल अभी लास्ट वीक? नाइल, वेयर वर यू इन द लास्ट वीक? यू वर सर कुमरात. गिलियात गए थे आप? गिलियात, राइट? नहीं सर, कुमरात. कुमराट, इतनी खूबसूरत वैली, और वहां पे सोडियम गैस. यार इस तरह तो ना करो यार नाइल. सोडियम इज अ मेटल. सोडियम इज अ मेटल. तो मेटल ने तो हमेशा क्या होना है? सॉलिड. लेकिन नाइल ने बड़ी टेक्निकल बात की. यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस का आपको पता है डिसएडवांटेज क्या है? नोट कर लें सब लोग. डिसएडवांटेज, इट कंज्यूम, ये बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है, ये बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, राइट? अगर आपने NaCl को मेल्ट करना है, भाई आसान काम तो नहीं है ना. तो यहाँ पे सोडियम वैसे तो होती है सॉलिड, लेकिन आपको पता है सोडियम इज अ ग्रुप 1 मेटल. ग्रुप 1 मेटल तो पहले ही सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लाइक बर्फी. आई रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द क्लास, ग्रुप 1 मेटल्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट इनफ कैन बी कट विद नाइफ. तो ये तो सोडियम तो पहले ही सॉफ्ट थी, ऊपर से हाई टेम्परेचर किया, तो यहाँ से जो सोडियम आएगी ना, ये लिक्विड फॉर्म में आप इसको एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करोगे, Na को लिक्विड फॉर्म में. तो यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में. सबको समझ आ गई बात? इक्वेशन इसको नोट करें, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. क्या मतलब दोबारा एक्सप्लेन करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा बस.
इसको नोट कर लें सब लोग, कुछ पूछना तो पूछें प्लीज, दोस हु आर, जिन्होंने नोट किया नहीं किया दे कैन कॉपी। सर आप इसके डिसएडवांटेजेस एक दफा प्लीज सर एक्सप्लेन करें। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, पैसे लगते हैं, और हम कौन है शरियर, हम कौन है इंसान। शरियर, आप इंसान, चले हम गरीब हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। सो इट दिस दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज वी कांट रियली, हमारे तो पहली बिजली नहीं आ रही भाई। आप देखें दो डे बिफोर यस्टरडे देयर वाज लाइक टॉम एंड जेरी लगा हुआ था घर में, कभी लाइट आ रही, कभी नहीं आ रही, कभी आ रही, कभी नहीं आ रही। सो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज इट नीड लॉट ऑफ एनर्जी, at the same time there are list of advantages as well. We can just look at the advantages. क्या advantages हैं? आप जो मर्जी कर लो इसका, NaCl का, इधर देखें सब लोग, आप NaCl को जो मर्जी कर लो, you can't just break Na and Cl, you can't break them apart until you do electrolysis. Electrolysis help us to separate, अगर आपने NaCl में से सोडियम निकालना है, there is no other way except to do electrolysis to get a separate sodium and separate chlorine. That's, look, at anode you got chlorine separately, and at cathode you got sodium. The most beautiful thing about this experiment is, remember the redox reaction, everyone? Haifa, you know what redox reaction is, Haifa? Yes, a reaction in which reduction and oxidation both Okay. take place. So mujhe bataye, how would you define oxidation, Haifa? How would you define the term oxidation? Anyone in the class? So Yes, it's the reaction in which the substance loses its electrons and gains oxygen. Excellent. तो मुझे बताएं, एनोड में, एनोड की पेन जो मैंने हाईलाइट की हुई रेड में, सब लोग गौर से देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं? What is happening here? Add हो रहे हैं. Astaghfirullah. Whenever electrons are written on the product side, देखो हमने इस क्लोराइड में से, इस क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वही इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? लूज होके एनोड से कैथोड। तो एनोड पे क्या हुई फिर? अभी हाइफा ने बताया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Oxidation. तो लिख लें सब लोग, ऑक्सीडेशन हैपेंस एट एनोड। तो फिर कैथोड पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। इसको प्लीज डाइजेस्ट करें सब लोग। भाई लिख लिया सबने? ओवरऑल ये क्या हुआ? इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। भाई आप लोग, आई एम नॉट श्योर, आप में से पहले अभी कुछ लोगों ने इसी सेशन में ज्वाइन किया है, कुछ लोग मेरे पहले से भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ के बहन भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं। सो यू ऑल, मोस्ट ऑफ यू नो द स्पीड। मेरी पेस अगर आप कहेंगे तो हम एक दिन में पूरी केमिस्ट्री भी उड़ा देंगे इंशाल्लाह। देयर इज अ वीडियो ऑन यूट्यूब with my name, Chemistry with Sir Bilal Rana, the crash course literally for 3 hours, straight 3 hours, and the whole of chemistry, I mean the entire IGCSE O Level Chemistry. But यहाँ पे मेरा भी एम है, फिर से कह रहा हूँ कि मैं स्लो हूँ। स्लो में इंटेंशनली इस वजह से, आई वांट यू टू नो एवरीथिंग अबाउट द वेरी सेम थिंग। सो लेट्स डू द समरी ऑफ दिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स। क्या किया हमने? आप कोई भी मोल्टन कंपाउंड लेंगे, दैट मोल्टन कंपाउंड शुड कंपोज ऑफ मोल्टन, अभी हम मोल्टन को टारगेट करें, must compose of two different elements. One should be metal, other one should be non-metal. जिस तरह ये था सोडियम क्लोराइड। तो जब उसकी आप इसकी समरी सुनो, अब 1 मिनट में you can predict the product. कैसे? When you look at that compound, the first part of that compound must always be a metal. First part क्या होने वाला है? It should always be a metal, and the second part of that should always be a non-metal. तो आप देखते ही बताओगे कि सर ये तो जाएगा कैथोड पे, ठीक है, जो भी है बस वही बनेगा। और जो सेकंड पार्ट होगा सर ये तो हमेशा एनोड पे जाएगा, और जो भी होगा उसका डायटोमिक बनेगा। दैट इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट विद इन 5 seconds. जस्ट लुक एट द रिएक्टेंट्स, डू नॉट गो फॉर लाइक होल स्टोरी। ये तो तब आएगी जब एमसीक्यू आएंगे, एक्सप्लेनेशन में आपको ये सारी चीजें, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग and for explaining the whole answer, this is important. But what if you're dealing with MCQs? How would you take that long? No, you just take 5 seconds to predict the reactant at cathode, I mean the product at cathode and the product at anode. Makes sense everyone? Oxidation at anode, reduction at cathode. सबको समझ आ गई? Okay.
Before we start with the next example, देखो next example है electrolysis of molten lead. अनाया मैंने सही स्पेलिंग की लिखे हैं lead के? Yes, sir. L-E-A-D, right? Yes, sir, it's correct. Thank you. Electrolysis of lead to bromide. पहले तो मुझे ये बताएं ना Shameen and everyone, where is Hamna? Let me take a round of the class. तुम लोग भी चुप करके बैठे भी हो ना, आज मैं ही बोल रहा हूँ. Okay. Hamna is here. I confuse it with Hamna. Hamna, why is this 2 in the Roman? Why it is not lead bromide? This is for everyone, but Amna will respond. Why is this 2 here after It's lead? the oxidation number. Excellent. And why it is there? I mean, why if I need to write magnesium bromide, why I didn't put 2 with magnesium? Why I wrote 2 with lead? Why is that, Amna? I'm not sure, sir. Okay, good. I respect that. We just accepted. Yes, we all are here to learn. Again, आप सबको पता है कि how we are going through our classes. We are here all to learn. कुछ चीजें मुझे नहीं पता है, कुछ आपको नहीं पता है. So I want everyone to be energetic. Yes, Anaya. Why the 2 is with lead and why there is no 2 Sir, with? it's because it's a transition element and they have various Excellent. oxidation states. Excellent answer. So whenever it is transition metal, भाई transition metal तो iron है. अब iron हमें क्या पता iron 2 है या iron 3 है? Because iron तो transition है. ये तो कुछ भी हो सकता है. 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी. So whenever Amna and everyone, there is a transition metal and you're writing the formula, do not forget to write the charge. Specify भाई ये वाला lead 2 है. Because lead तो 1 भी हो सकता है, lead तो 3 भी हो सकता है. तो ये वाला lead क्या है? 2+. कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया, I think 1 or 2 days, 2 years back. Write the name of this. और आपको पता है 95% बच्चों का ये गलत था. मतलब इसका नाम बताना है आपने, बताएं जरा नाम. Sir, Calcium copper sulfate. 2 sulfate. Yes, Samir. Copper Copper sulfate. सब बच्चों ने ये लिखा हुआ था जो अभी मुझे समीर ने और सबने बताया, कॉपर सल्फेट. और इसी वजह से वो सारे बच्चे 95% वाली कैटेगरी में थे, क्योंकि और उनको आपको पता है गोरा इज अ बिग स्कैमर. उसको पता था कि मैं ये दूंगा, सारे बच्चे कहेंगे वाओ इट्स वेरी इजी, एक नंबर तो पक्का वो कॉपर सल्फेट. भाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल. आपने देखना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ कॉपर है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ सल्फेट आयंस, 2-. तो ओवरऑल 0 करने के लिए कॉपर का क्या चार्ज होना चाहिए, 2+. तो दिस कॉपर इज 2+, तो इट शुड नॉट बी कॉपर सल्फेट बट कॉपर 2 सल्फेट. तो किसी बच्चे ने भी 2 नहीं लिखा हुआ था, 1 नंबर तो गया. इसलिए फॉर ट्रांजिशन मेक श्योर आप उस चीज को करेक्ट देखें. आई थिंक हम थोड़ा लेट हो गए अपनी डिस्कशन में. चले मेरी क्लास से अगली मैं जल्दी से लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला. लेड टू ब्रोमाइड का ये फॉर्मूला है, लिक्विड है. जल्दी से एनोड और कैथोड की इक्वेशन लिख दे मुझे. दैट्स द लास्ट थिंग फ्रॉम द क्लास. शाबाश. हरी अप एवरीवन. Lead to bromide is being electrolyzed. Step number 1 is predict the ions, and step 2 is just write the correct equations. Hurry up, I'm getting late for the next class for the elements. Done, sir. Excellent. Yes, Dr. Zoya, want to say something or you want to ask something? I want to answer. Okay, hold on. I know you know the answer. Okay, Zoya से मैं पूछता हूँ, can you just predict the product of cathode at cathode? Cathode, it will be PB. Okay.
एंड एनोड वुड बी द सेम थिंग बिकॉज वो हमेशा डायटोमिक होता है, मैंने बताया। ओके, सबसे पहले आपने आयंस प्रेडिक्ट करने हैं। व्हाट आयंस इट विल प्रोड्यूस? लेड के ऊपर तो चार्ज फार्मूला में लिखा हुआ है Br के ऊपर -1 होता है। इक्वेशंस में एनोड विल अट्रैक्ट द एनाइंस एंड वी नो ब्रोमाइड एग्जिस्ट एज ब्रोमीन, 2 यहां लगाया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां लगाए, बैलेंस हो गई। भाई ये तो पिछली कॉपी पेस्ट ही किया ना, कुछ नया नहीं किया। Cl नेगेटिव था तो Br नेगेटिव भी उसी ग्रुप में रहता है ना, वैसे लिखेंगे। लेड हैज 2+ चार्ज। तो अभी महानूर और सबको मैंने बताया कि whatever the charge, you add the same amount of electrons here to get the stuff done. Make sense, everyone? Please say yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Bye bye, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह हाफिज। उससे पहले ये रिवाइज करके आना सब। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।